ये 24 hour flight you just mentioned that you took to go to the US, तो ये सिली सा सवाल है, बट 24 घंटे की जो फ्लाइट होती है उसमें हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? डू यू बी प्रोडक्टिव, या तो मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स लाइक स्लीपिंग आल्सो वुड टेक सम पार्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू यूजुअली डू? आई थिंक डिपेंड करता है आप किस में ट्रैवल कर रहे हो. अभी इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हो कि बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो. मैंने दोनों में किया है ट्रैवल. तो बिजनेस में जब ट्रैवल करता था तो फिर ऐसा आधा टाइम तो आई थिंक खाना खाने में चला जाता है. वो ला रही है ये स्टार्टर कोर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट कोर्स, फिर ये फिर वो कोर्स, और फिर बेसिकली द अदर पार्ट आई स्पेंड मे बी लाइक वॉचिंग सम वीडियोज़ या फिर रेस्टिंग. मेरे को पहले नींद नहीं आती थी इन अ लॉन्ग फ्लाइट. अभी मुझे आने लग गई है बिकॉज आई थिंक माई बॉडी इज ऑल्सो टायरिंग. बट पहले आई कुड नॉट स्लीप, तो आई वुड जस्ट स्टे अवेक एंड वॉच सम मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर जस्ट बिंज वॉच टीवी सीरीज एंड जस्ट डू दैट. अभी ऑन माई लास्ट फ्लाइट विच हैड अ ले ओवर इन एम्स्टरडैम फॉर 2 hours. एम्स्टरडैम से बैंगलोर की फ्लाइट वॉज 9 hours एंड आई स्लेप्ट फॉर लाइक 5-6 hours ऑफ दैट टाइम, विच इज़ ह्यूज. मतलब मैं इतना सोता ही नहीं हूँ कभी किसी फ्लाइट में, पता नहीं कैसे सो गया, इवन इन इकोनॉमी. But I think the best experience hands down has been Qatar ka business class, which was incredible. Again, Apple booked it. It was like some 5 lakh rupees आना जाना, and I loved it. Basically it was a 22 hour की फ्लाइट थी. 4 घंटे तो दोहा में 2 घंटे का ले ओवर. उसके बाद about 16 hours more. तो 16 घंटे की जर्नी फ्रॉम दोहा टू सैन फ्रांसिस्को. What was so unique about this flight or experience? अरे वो बिजनेस क्लास नहीं है, वो फर्स्ट क्लास लगता है. मतलब आपको यू गेट लाइक अ रूम आपके लिए, सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है. बेसिकली देयर इज लाइक अ डोर विच गेट्स क्लोज्ड एंड देन दैट्स जस्ट योर प्लेस. वहाँ पर देयर वर लाइक 2 seats. You can sit there as well, and there's like a massive TV. There's plenty of room to just relax, lay down. The seat reclines as a full bed. एंड बहुत सारी जगह है वहाँ पे, राइट. दे गिव यू पजामाज टू चेंज इन टू, दे विल गिव यू, उनका खाना इतना बढ़िया है. लाइक दे आर द बेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड फॉर अ रीज़न. एंड आई लव्ड how I could use internet whenever I want throughout the whole flight. So you could use internet also? Yeah, I could. Oh, I could answer my emails, send images, talk to anyone that I want. They have so many things that you can do. I just loved it. मतलब I didn't even feel that to me was like a experience in itself. So that was the best part. So you can also talk while you are in the flight? हाँ, मतलब you can take calls ना. My friend was doing like a Zoom call on the flight. Oh wow. So Starlink के साथ collaboration करते हैं बहुत सारी flights, and they're able to do that. So stuff like that. This is something which is new to me also. Very crazy. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.